వ్యాక్సిన్ పంపిణీపై కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. ऑथेंटिकेशन हो सकता है और इसमें यूनिक हेल्थ आईडी का क्रिएशन हो सकता है, एईएफआई की रिपोर्टिंग हो सकती है। 12 भाषाओं में ये आपके फ़ोन पर एसएमएस भेजने की सुविधा रखता है। क्यूआर कोड आधारित वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये जनरेट करेगा और आपको भेजेगा यदि आपने दोनों डोजेज लगवा ली हों। डिजी लॉकर में आप अपना डिजिटल सर्टिफिकेट रख सकें वैक्सीनेशन का, उसकी सुविधा है। उसके लिए इसका इंटीग्रेशन यानी डिजी लॉकर एक अलग सुविधा है और कोविन एक अलग सुविधा है, तो दोनों में एक संपर्क हो, वो हमने इंटीग्रेशन का काम भी किया है। इसके अलावा जो लोग इस व्यवस्था को चलाएंगे यानी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को चलाएंगे, भारत सरकार में, राज्य सरकारों में, यूनियन टेरिटरीज में, उनकी भी समस्याएं हो सकती हैं। To troubleshoot their problems and issues, we would have a 24/7 helpline which will be addressing these issues. In addition, हमने एक चैटबॉट की भी व्यवस्था की है जो वॉइस पैटर्न रिकग्निशन पर काम करेगा। तो अगर आप इस ऐप को जब भी ये लॉन्च होगा और आप इसे डाउनलोड करेंगे तो उसमें आप चैटबॉट की सुविधा भी पाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की भी इसमें सुविधा है और ड्राई रन हमने करके देखे हैं कि इसकी जो विभिन्न कंपोनेंट हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो काम कैसे करते हैं और उनमें क्या कोई बाधा अगर आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए। और राज्य सरकारों की हमने ट्रेनिंग भी की है जो लोग इसको चलाएंगे आईटी प्लेटफॉर्म को, ताकि उनको सुविधा हो। अब ये जरूरी है कि जो आप वैक्सीनेशन करेंगे, जब भी प्रारंभ करेंगे, तो पहले सारी व्यवस्थाओं की फील्ड टेस्टिंग हो। तो 28 और 29 तारीख को हमने देश के 4 राज्यों में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमने पंजाब लिया था, आंध्रा लिया था, ईस्ट में आसाम और वेस्ट में गुजरात। इनके 7 जिलों में हमने इसका एक ड्राई रन किया जिसमें कि हर जिले में 5 सेशन साइट्स और हर साइट में 25 वैक्सीनेशन विदाउट द वैक्सीन ऑब्वियसली ये टेस्ट किए गए। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं सामने आया। कुछ माइनर इशू कोविन की वर्किंग से रिलेटेड राज्यों ने बताए थे, उन सबको हमने एड्रेस किया है। राज्यों ने हमारे साथ ये जानकारी भी साझा की कि जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस हमने निकाले हैं उनको वो समझ पा रहे हैं और उनको फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसके रोल आउट से संतुष्ट होकर फिर हमने बड़े पैमाने पर 2 जनवरी को एक ड्राई रन किया, लार्ज स्केल ड्राई रन। उसमें 4 उद्देश्य थे कि ऑपरेशनल फीजिबिलिटी हम कोविन की देखें, उसको फील्ड में टेस्ट करें बड़े पैमाने पर, और लिंकेजेस जो प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और रिपोर्टिंग के बीच की हैं, क्या वो काम करती हैं या उनमें कुछ कठिनाई आ रही है, क्या चैलेंजेस हैं और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन से पहले उन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए, और किस प्रकार से जिन लोगों को ये कार्यक्रम फील्ड में करना है, पीएचसी पर, सीएचसी पर, जिला अस्पतालों पर, उनमें ये आत्मविश्वास पैदा हो, प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू प्रोग्राम मैनेजर्स दैट दे कैन एक्चुअली डू इट। ये 4 उद्देश्य थे। हमने 286 सेशन साइट्स इसमें 125 जिलों में तैयार की और उसमें ये पूरी प्रक्रिया फिर से की गई। फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ सब साइट्स का कि वहाँ पर्याप्त सुविधा कमरों के रूप में या जो इंतज़ार करना है वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट तक, वो सारी सुविधाएं बिजली की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, सेफ्टी की उपलब्ध हैं कि नहीं है। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए, इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया, सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया, और ये भी देखा गया कि जहाँ भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहाँ इन्फेक्शन ना फैले, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इस पर भी ध्यान हुआ। तो ये हमें ये बताता है कि हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी
यूज़, ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Now I invite DG ICMR for the presentation, please. First of all, I'd like to congratulate everyone that all of you and India, that we have 2 vaccines which are now going to be available, and as the Honorable Health Secretary has said, that this will happen very soon. So just a few general points before I talk about what is available for these vaccines. The safety, immunogenicity and efficacy data are required for approval of a vaccine in a non-emergency situation. This is for a non-emergency: safety, efficacy and immunogenicity. Existing pandemic situation with high mortality, available science and a lack of definitive treatments are considered by SEC for accelerated approval, as the Health Secretary has said. That is in our legal provision. In a pandemic situation, restricted use is considered based on safety and immunogenicity data, while phase 3 is still ongoing. Immunogenicity data generated through phase 2 clinical trial serves as a surrogate for efficacy. And the clinical trial rule 2019, the CTR, provides for considering phase 2 results to guide approval. Now, the subject expert committee guides the DCGI in the process of decision making for restricted use under emergency situation. So now we have these 2 vaccines, Covishield and Covaxin. Next, please. One is an inactivated whole virus, and the second is a recombinant vector vaccine expressing spike protein. The inventors are Bharat Biotech and Indian Council of Medical Research and the Jenner Institute at Oxford University for that. And the licensing rights are Bharat Biotech and AstraZeneca and Serum. Next, please. So now 1 or 2 slides about Covishield and 1 or 2 slides about Covaxin. So in Covishield, we have the UK studies, which are the animal studies, which have showed that pneumonia is prevented in monkeys, and they have elicited good immune response in mice. In the clinical trials, 1,077 participants of phase 1 and 2 showed acceptable safety profile, and homologous boosting increased antibody responses. And the phase 2 or 3 in prime boost regimen in 560 participants shows that it was better tolerated in older adults than in younger, and has similar immunogenicity across all age groups, and this was published in the Lancet. The phase 3 in 11,636 participants showed an efficacy of from 62% to 70.4% and then 90%, and this has just been published early last month on online only. Next, please. What is available for Covishield in India in terms of the Indian study? In terms of the Indian study, there were 1,600 participants. They have all been recruited. Their immunogenicity data is being generated. More than half is available. Age group was more than 18. And Covishield is safe and immunogenic. And the data showed that it is non-inferior to the UK product. So this is an important point which led to the approval. Next, please. In terms of Covaxin, we have the Indian studies on animals, which on rats, mice, rabbits, hamsters and monkeys, showing excellent safety, immunogenicity and robust viral clearance in both in the upper respiratory tract and the lower respiratory tract in large animals. And the phase 1 and phase 2 clinical trials on 375 and 380 participants, age 18 to 55 and age 12 to 65, showed very low adverse events, neutralizing antibody responses equivalent to human serum, strong antibody responses to all structural proteins, which include the spike, the RBD and the N protein, CD4 T cell response,
CD45 RO T cell memory response up to 3 months after vaccination, and Th1 biased cytokine response, which is very important as well. And the phase 3 clinical trial is when 25,800 participants, 24,000 have been enrolled, and there are no safety concerns. They have been given their first dose, and more than 5,000 have been given the second dose, and restricted use has been given in clinical trial mode for this, which means, what does this restricted use in clinical trial mode means? That they have to give a consent, and there has to be a regular follow-up of these participants. Now, these are the publications of this Covaxin. The animal studies have been published in Nature Communications and iScience, which is a cell journal, and it also was placed in the preprint of BioRev. The phase 1 trial has been published on Lancet Infectious Diseases, appearing in press on the 8th of January, and the phase 2 paper is under review, and they also have the protocol. కరోనా వ్యాక్సిన్ విషయంలో పరస్పరం విమర్శలు చేసుకున్న భారత్ బయోటెక్, సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఇప్పుడు కలిసిపోయాయి. వ్యాక్సిన్ విషయంలో ఓ జాయింట్ స్టేట్మెంట్ రిలీజ్ చేశాయి. కరోనా వ్యాక్సిన్ తయారీ, ఉత్పత్తే తమ రెండు సంస్థల ముందున్న లక్ష్యమని ఆధార్ పున్నవాలా, కృష్ణ ఎల్లా ఓ స్టేట్మెంట్ ను రిలీజ్ చేశారు. దేశానికి, ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్ సప్లై చేయాలనే ఉద్దేశంతో తాము పనిచేస్తున్నామన్నారు. దేశంతో పాటు ప్రపంచంలోని ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడటమే తమ ముందున్న లక్ష్యమని తెలిపారు. దేశంలో సాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడి ఆర్థిక కార్యకలాపాలు ఎప్పట్లాగా ప్రారంభమవ్వాలంటే అది కేవలం వ్యాక్సిన్తోనే సాధ్యమవుతుందన్నారు. ప్రస్తుతం 2 వ్యాక్సిన్ల అత్యవసర వినియోగానికి అనుమతి ఇచ్చిందని, పూర్తి రక్షణతో కూడిన వ్యాక్సిన్ తయారీ, సప్లైపై తాము ఫోకస్ పెట్టామని స్టేట్మెంట్లో తెలిపారు. మనలాంటి దేశంలో వ్యాక్సిన్ ఎంత అవసరమో తమకు తెలుసన్నారు.